हेलो एवरीवन। आज हम Azure DevOps को ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं। हम ये सीखेंगे कि UiPath से कैसे हम ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू कोड को रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा मेन वर्कफ्लो है और इसमें हमने सिर्फ एक मैसेज बॉक्स लेके रखा हुआ है जो कह रहा है कि आवर कोड इज़ वर्किंग फाइन, दैट्स ओके। और इसको मैंने अपने गिटहब रेपो में पुश भी करके रखा हुआ है अभी तक। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो फोल्डर और दो फाइल्स हैं और ये मेरा ऑर्केस्ट्रेटर है जहाँ ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है। मैं इसी में इसको पुश करने वाला हूँ, पब्लिश करने वाला हूँ। तो आइए पब्लिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे और पब्लिश ऑप्शन में हम टेनेंट प्रोसेस फीड ले रहे हैं और ये कर दिया हमने पब्लिश यहाँ से। अभी ये पैकेज बिल्ड हो जाएगा और ये हो चुका है। और अब हम जाएंगे और ओपन करेंगे अपना ट्यूटोरियल फोल्डर। अभी हमें यहाँ पे ऐड प्रोसेस करना है। हमें एक पैकेज को सिलेक्ट करना है जो कि है ये वाला पैकेज और इसका ये ऑटोमेटिक ही वर्जन फेच कर लेगा। जैसे कि 1.013 है यहाँ पर, तो ये फेच हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। और अभी दोबारा नेक्स्ट, और ये बोल रहा है कि प्रोसेस का डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ जैसे DevOps UI इंटीग्रेशन। और जो प्रायोरिटी को हम कर रहे हैं नॉर्मल, और ये डिस्क्रिप्शन ब्लैंक प्रोसेस रहने दो प्रोसेस। और ये कर दिया हमने क्रिएट। जैसे कि आप देख सकते हो, अब यहाँ पे DevOps UI इंटीग्रेशन क्रिएट हो चुका है और ये यहाँ से रन हो सकता है। चलो चेक करते हैं। अभी हमें रन करने के लिए, रन करने के बाद यहाँ पर हमें एक अकाउंट और एक मशीन को लेना होता है। मेरे केस में manage machine and then so this one, ये मशीन मैंने ले ली है। और तो ये हमने रन टाइम लाइसेंस को अपडेट किया है, इसको हमने टेस्टिंग में रखा है और बाकी सब वैसे के वैसा ही है। और यहाँ पे हम ये स्टार्ट करते हैं तो कमांड सेंड हो चुकी है और UiPath असिस्टेंट रन हो रहा है यहाँ पर। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैसेज बॉक्स में मैसेज आ चुका है जो हमने अपने मेन वर्कफ्लो में बनाया है। तो इसका मतलब है ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ है। अभी हम अपने डेवऑप्स में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करके रखा है, ये वाली। तो अभी हम इसमें प्रोजेक्ट का नाम देने वाले हैं DevOps and UiPath integration. So description is the demo project to show the working of Azure DevOps pipelines using UiPath and प्राइवेट ही रहने देंगे इसको। और अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी रेपो को। तो अब ये जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे DevOps UiPath इंटीग्रेशन बन चुका है। और अब हम नेविगेट करेंगे अपनी पाइपलाइंस पे। तो पाइपलाइंस पे अभी हम पहुँच चुके हैं और हम यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी पहली पाइपलाइन। सो
आपको सबसे पहले मैंने गिटहब से लॉगिन किया है, इसलिए ये अब मेरी रेपोजिटरीज को खुद ही फेच कर लेता है। और अभी जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाली रेपो मैंने क्रिएट की है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये वैलिडेट होने के बाद ये हमसे ये पूछ रही है कि आपने कौन सी वाली रेपो को करना है, परमिशन देनी है। तो मैंने इसको दे दिया है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं, और हम अप्रूव एंड इंस्टॉल का परमिशन दे देंगे इसको। तो अभी तक हम देख रहे थे जैसे कि यहाँ पर कोई भी अभी फाइल क्रिएट नहीं हुई है, तो एक फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट होने जा रही है अभी। ओके, तो अभी हम लेने जा रहे हैं स्टार्टर पाइपलाइन। तो ये स्टार्टर पाइपलाइन लेने के बाद कुछ ऐसा सा दिखता है। और जैसे कि अभी हम जाएं शो असिस्टेंट में और यहाँ पे सर्च करें यूआई पाथ, तो यहाँ कुछ है नहीं यूआई पाथ में, लेकिन हमें यहाँ पर यूआई पाथ का पूरा पैकेज चाहिए। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ होम पेज पे और जाना है ऑर्गेनाइजेशंस की सेटिंग में। अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग में जाएंगे। अभी यहाँ पे एक्सटेंशंस है, इस एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पर ब्राउज मार्केट प्लेस करेंगे। आफ्टर ब्राउजिंग टू मार्केट प्लेस you will reach here and search for UiPath extension. Just search it, and this is the extension you need, and click on get it free. तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये मार्केट प्लेस खुल चुका है और ये पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है। तो हमने ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम करेंगे प्रोसीड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पर अब यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी हमने डेवऑप्स इस पे क्लिक करना है और अभी हम जाएंगे पाइपलाइन पे। तो हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी पहली पाइपलाइन और गिटहब की एक्सेस देंगे और अभी क्लिक करेंगे अपनी रेपो को, स्टार्टर पाइपलाइन लेंगे और ये हमारी स्टार्टर पाइपलाइन है। इसकी लास्ट लाइन पे जाके सो असिस्टेंट करेंगे और अभी अभी के लिए हम सेव एंड रन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये क्या कैसे रन होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर कोई भी होस्ट नहीं है, तो ये नहीं चला है, बिल्ड फेल हो चुका है। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये ऐसा सा दिखेगा। अ, ये है एरर जो हमें मिला है। तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स की सेटिंग में। जो आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग है उसमें जाना है, उसके बाद सर्विस कनेक्शंस में जाना है, फिर आपको एक नया सर्विस क्रिएट करना है, सर्विस कनेक्शन क्रिएट करना है। In my case it is UiPath and this is orchestrator connection and required. So first of all I am going to log in using token. So for this token we will be navigating to UiPath Orchestrator. Go to admin, and after this you will be expanding this default tenant, and after this orchestrator three dots menu is there. So click on this menu and go to API access. Here you will find your credentials. So, so this is my token, so I will be copying this and using it
first of all, it is the URL and authentication name and API key. The key I have copied is going to be pasted here. And for orchestrator URL, you have to this is my logical name, account's logical name. So it is going it will be going in this particular section, and for the tenant it's default tenant. So I'm going to copy this and then paste it here. And for this orchestrator URL, just navigate to this orchestrator and copy this URL, and now paste it here. And this is a token based authentication, and then I'm going to grant access to all the pipelines. So service connection name, so we have to provide a service connection name. So we will be calling it connection between orchestrator and uh, DevOps, and description none, and then click on save. So as you can see, the connection is created now. So what we will do next, so we will be navigating to pipeline, and so we will be navigating to these pipelines. We will be selecting this pipeline we were working on, and uh, so the starter code will be published to this particular git repo. So I'm going to refresh it, and as you can see, here is the code for Azure pipelines, which is initial code. So first of all, we will go here and click on three dots, edit pipeline. Now we were not able to see that those UiPath plugins here. Now those will be visible to us. So our uh, main task is to run this process. So we are going to run this process through orchestrator. So I'm going to use this. So we will go here and select run job for our task, and we will navigate to the last line. Connection name, just we have created that and this connection recently, and the process name is here. This is the process name. So just copy it and paste it here. Input parameters, so I haven't provided any input, so nothing, and it will be normal. Orchestrator folder, yeah, orchestrator folder is this tutorial. So go here and type in tutorial, and after that strategy is dynamic, job type is test, number of job is 1, user. Now who's the user? So as you can see, the name of the user, and you have to take the username as per your machine. So for this, type in who am I command and you will get your username. For me, this is my username. I am copying it and pasting it here. I'm not providing the machine name, and here and timeout, maybe leave it as it is, and then trace level is none, and now add. Now as you can see, code has been added successfully. Now click on save, and save will commit this to this git repo. You can add additional description, so I'm not adding any. So I am committing directly to the main branch and then clicking on save. Now after save, this run is visible. Now click on run, and it will not run. uh,
So the job is starting, and as you can see, job. This is our job, and uh, it has failed. So why this is happening? Because we don't have any machine inside our system. So we are going to install a local machine for this. So how to do that? So we will be going to homepage and going to organization setting. We are going to create a pool. So click on agent pool. We have two pools already, Azure Pipelines and default. We are going to create a pool. So what is type? It's self-hosted. So it's self-hosted. What will be the name? So in my case, it is Naveen, and description is optional, so nothing. And grant permission to all pipelines and then create. Now as you can see, Naveen is here. Click and create a new agent here. You will be asked to follow these steps. So click on download. The agent will start downloading. This agent is now downloading. We will wait for the download is complete. So the agent, I have downloaded the agent and it is inside my downloads folder. So what I'm going to do is I'm going to open the PowerShell, and you can see it is on C drive. So we'll open this PowerShell and we will navigate to C drive, and here we are at C drive. Now let's copy these commands and paste it here. So first command, enter. Okay, now we will use this command and copy and then paste it and hit enter. It might take some time. Okay, now it is done, and now we have to do the configuration for our agent. So we have to navigate to agent, and then we have to type in this command. So let's do it. We are inside agent and we are using this command, and configuration has been started. So enter the server URL. For the server URL, we have to take the server URL here. This is our server URL. Just copy it and paste it here and hit enter. Enter authentication type PAT. PAT here stands for personal access token, and this is the first thing we need to create. So I forgot. So what we will do is we will go here, sorry, here, and then click on PAT. Now this is the page, and now click on new token. Name is testing, and then Naveen is this 30 days and full access. I'm giving I'm giving full access. So we are going to give it a full access and then create. Now copy this PAT, close it. Now open a notepad file and paste it somewhere and keep it safe. So this is my PAT and it is required here, so I'm giving it here, hitting enter. Enter the authentication type, press enter for PAT. Sorry, we have to hit enter for PAT. So hit enter, enter the PAT. Now hit enter. Now it will be connecting to server, creating, enter agent pool. So agent pool we have created.
is Naveen. In our case, not we are not using default, so we are using Naveen. So let's cross check. So we will be going to mm, here, home page, organization setting, agent pool. After agent pool, Naveen is this. So yeah, Naveen is the name of this pool, and hit enter. So enter the agent name. Press enter for txt Okay, I'm hitting enter for this particular name, the name of my PC. So it is connecting to server. Now it is asking us for work folder. Please enter for underscore work. Enter. So settings saved. Run agent as a server. Service no. Auto log on. We don't need it to start on startup, so I will be writing n. Now configuration is done. Now our job is to run this particular. So we're creating new agent. So we have left here, and we have to use this particular command. So the command is here, and paste it here and hit enter. Now it is scanning for tool compatibilities and connecting to the server. Now it is listening for jobs. So go to now you can see our laptop is ready and online. So machine is ready. What we will go to our project. We will go to pipeline, the pipeline we have created, and we will edit the pipeline. Now it is asking for the authorization of this GitHub, and this is the default code. We haven't changed nothing. We have changed nothing from this particular code. I'm going to change this VM image. So pool, the pool will be Naveen. So yeah, I am entering the pool name here. Just that's it, and it is going to trigger the main branch. Now click on save, and run. Now let's see it runs or not. So yeah, job is quit, and now okay, job is started. Okay, now as you can see, message box is here. So our code ran successfully. So pipeline we have set up,
And for those people who are getting an error message related to this, there is an error that is coming for GitHub versions related something. So for that you have to install the npm, and our job is finished now. If you're getting error like this, so it basically says the npm agent version is something or something. So in that case, what you have to do is you have to install the npm, and you can look into this location inside the roaming npm folder. I'm just copying this particular address, and go to your Azure DevOps and click on the portal's homepage. Go to the organization setting, go to agent pool, and after that click on your pool. So in my case, this is my pool. Go to agents. Now click here, select the agent, and here you can see the capabilities. So go to the capabilities. So there is no user defined capability. I'm going to add a new capability. Name will be npm, and the value will be this location. So this is you have to do. Click on add, and in this way it will work fine for you. And that's all. In this way you can run UiPath project using this particular Azure DevOps, and that's all. Thank you.